अमेरिका ने हाल ही में अपना सूर्य मिशन भेजा है और वह सफलतापूर्वक सूर्य की कक्षा में पहुंचने में कामयाब भी रहा है। हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे यह यान, जिसका नाम पार्कर सोलर प्रोब है, सूर्य तक पहुंचने में कामयाब रहा। आपको एक बात मैं पहले ही बता देना चाहता हूं कि सूर्य पर पार्कर सोलर प्रोब ने लैंड नहीं किया है। वह सूर्य के बाहरी कक्षा, जिसे कोरोना भी कहते हैं, उसमें प्रवेश करने में सफल रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अप्रैल में पहुंचने के बाद इस यान के डेटा का परीक्षण किया गया और उससे मिली जानकारी साझा की जा रही है। जैसे पृथ्वी की तरह सूर्य की कोई ठोस सतह नहीं है। सूर्य के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड और गर्म हवाओं का एक गोला। सूर्य एक बेहद गर्म बॉल की तरह है और पृथ्वी की तरह इस पर कोई ठोस सतह भी नहीं है जहां पर यह यान लैंड कर सके। इसलिए यह सूर्य की बाहरी कक्षा में प्रवेश किया है, जिसका नाम कोरोना है। पार्कर सोलर प्रोब को 2018 में सूर्य की स्टडी करने के लिए लॉन्च किया गया था। साइंटिस्ट का मानना है कि यह सूर्य की हवाओं और कोरोना क्लोजअप के अध्ययन में मदद करेगा और इससे यह जानकारी मिल सकती है कि सूर्य पृथ्वी को कितना प्रभावित कर सकता है। हालांकि यह यान सूर्य की बाहरी कक्षा में ही प्रवेश किया है, लेकिन नासा ने इसे सूर्य को स्पर्श करने का दर्जा दिया है। उन्होंने बताया कि यह यान सफलतापूर्वक सूर्य को छू चुका है। नासा के इस मिशन को कामयाब बनाने के लिए 2 साइंटिस्टों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। एक नूर रोफी और दूसरे हॉपकिंस अप्लाइड। यही वो 2 वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इस मिशन को कामयाब बनाया। साइंटिस्ट ने बताया कि अब हम आसानी से सूर्य की चुंबकीय स्थिति को समझ सकते हैं। उन्होंने डेटा का विश्लेषण करने के बाद बताया कि अब हम सूर्य को चंद्र ग्रहण के दौरान और नज़दीक से देखने में सक्षम हो गए हैं। The Parker Solar Probe, a mission to touch the sun. Presented by Science at NASA. People around the world look up and see our sun every day. But through a space telescope, it looks nothing like it does from down on the ground. The surface dances with arches of solar material that reach up into the solar atmosphere, an environment of charged particles and magnetic fields unlike anything we experience on Earth. In 2018, the Parker Solar Probe will launch from a Delta IV Heavy rocket and travel approximately 3 months to take its first swing by the sun right through that atmosphere. Over 7 years, it will get ever closer until ultimately it's within 3.9 million miles or 6.2 million kilometers of the sun's surface. That's so close that the previous record holder, the Helios B spacecraft, was 7 times farther away. An important objective of the Parker Solar Probe is to learn more about the solar wind, an exotic stew of magnetic forces, plasma, and particles. It interacts with planetary magnetospheres and atmospheres, which over the eons may have contributed to a planet's habitability. It blankets our spacecraft and astronauts traveling to the moon and Mars. It affects space weather at and around Earth and causes beautiful aurorae. The solar wind also travels at immense speeds, and scientists want to learn why. It leaves the sun at a speed of up to 500 miles or 800 kilometers per second and engulfs all major planets in the solar system. What is the source of the wind? From a distance, it's difficult to tell. Dr. Adam Szabo, the Parker mission scientist at NASA's Goddard Space Flight Center, says, "We've been examining the solar wind for over 50 years, but the wind is processed by the time it reaches Earth. By studying it much closer to the sun, the Parker probe will be able to tell us such things as what part of the sun is providing the energy source for the wind's particles and how they can accelerate to such incredibly high speeds." It's like trying to understand how a car runs without looking at the motor. It's important to get under the hood to determine the mechanisms driving the actual system. The Parker Solar Probe is the only NASA mission named after a living person. Dr. Eugene Parker, an astrophysicist, is credited with developing the theory behind the solar wind in the late 1950s. When asked why he thinks so many people are drawn to this particular mission, Dr. Parker said, "I assume it's the same reason that I got excited about it. This is a journey into Never Never Land, you might say, where it's too hot for any sensible spacecraft to function.
But some very clever engineering and construction has succeeded in making what looks like a very workable mission. Clever indeed. At its fastest speed, the Parker Solar Probe will orbit the Sun at 430,000 miles per hour or 716,000 kilometers per hour. That's fast enough to get from New York City to Tokyo in under a minute. It will absorb temperatures as high as 2,500 degrees Fahrenheit or 1,400 degrees Celsius. वैज्ञानिकों ने बताया, पार्कर सूर्ययान लगभग सूर्य के केंद्र से 13 मिलियन किलोमीटर दूर था जब उसने सौर वातावरण और हवा के बीच की दूरी को पार किया। और उन्होंने साथ में यह भी बताया कि सूर्ययान कोरोना के अंदर और बाहर जाने में 3 बार ही सक्षम था। पार्कर मिशन की टीम के अनुसार यह भी पता चलता है कि जो आंकड़े उन्हें प्राप्त हुए हैं उसके अनुसार 10वीं बार पार्कर ने सूर्य के नज़दीक अपना कदम बढ़ाया है। पार्कर यान के 2025 तक सूर्य के और करीब जाने की संभावना